So today we are going to discuss B.PHARM 5th semester unit 1, that is about drugs acting on cardiovascular system. So in drugs acting on cardiovascular systems, first part is electrophysiology of heart. Electrophysiology of heart. So when we talk about electrophysiology of hearts, so one thing which you might have seen, first we talk about resting membrane potential of cells. So resting membrane potential of the cells, particularly cardiac cell, is minus 90 millivolt. So this is the resting membrane potential of the cells, particularly the cardiac cells. Other cells resting membrane potential is minus 70 millivolt, right? So what actually this potential is? It's a action potential differences across the cell membrane when cell is at rest, that we call resting membrane potential. So it's minus 90 millivolt. And when we talk about electrophysiology of heart, as I said, you might have seen like this. This is a 0 phase, this is a 1 phase, this is the second phase, this is the third phase, and then again there is a fourth phase. So there is a different phases by which electrophysiology of heart is occurred. So first one is 0 phase. So 0 phase, what happened in the phase 0? So as I said, resting membrane potential of cardiac cell is minus 90 millivolt. That means at resting stage the cell membrane is negatively polarized, right? So cell membrane is negatively polarized at the resting stage. So what happens in the phase 0? Whenever their action potential is generated, whenever there is any stimulus, so what will happen? There is a movement of ions across the cell membrane. So movement of ions which happen is sodium ions. Sodium ions moves from the extracellular fluid to intracellular fluid with the help of sodium channels. So when first thing, what is going to happen, your sodium is moving from extracellular fluid to intracellular fluid, and due to this movement what will happen, your action potential is going towards upward sides or going to become less negative. Why? Because the charge on the sodium is positive. So it will become less negative, and when it will reach to the threshold point or threshold value, when action potential reaches to the threshold value, then what will happen? Then your other ion channels, which are voltage gated sodium channels or voltage gated calcium channel, will open. As their name indicates, the channel will open only when your action potential reaches to the threshold. That's why we call these kind of channel is voltage gated sodium channel, voltage gated calcium channels. So these channels will be opens, and due to opening of these channels, what will happen? There is a more influx of positive ions from extracellular fluid to intracellular fluid, and again when more movement of positive ions from the extracellular fluid to intracellular fluid, then what will happen? Your action potential will goes towards positive sides, right? It will become less negative, and ultimately become positive, right? That process we call depolarizations. Earlier I said at the resting membrane potentials our cell is negatively polarized. Now when your movement of ions, cations is happening, so it results in phenomena. That phenomena we call depolarizations. So this is the depolarization phase. Depolarizations, right? Now what will happen in the first phase? Next phase is first, then second, then third, then fourth. So first phase, what is going to happen? Your sodium channels which are open, now they are going to close. So in first phase your sodium ion channel is going to close, right? Your positive ion channel is going to close at this phase. So you can see that there is a little bit dip in the action potential, because now there is a movement of cations from the extracellular fluid to intracellular fluid is decreased. So due to that your action potential will little bit dip. So in the first phase there is a little bit decrease in the action potential. That is your first phase. So in first phase what happens? Your sodium ion channel is closed. Then second phase. So you can see that in second stage your action potential is become little bit stable, right? It become like this, and this phase also we called a plateau phase.
plateau phase. So what is going to happen and why this is a plateau phase? The reason is, here what will happens, your potassium channel is open, potassium is open. Potassium channels, whenever it open, even though potassium contains the positive charge, your action potential will not go towards the positive sides. The reason is because potassium is inside the cell is more and outside it's less. So whenever potassium channel open, the movement of potassium will happen from inside to outside. And when your potassium ions is moving from inside to outside, so your action potential is going to towards the negative sides, right? So again, but this is the one, potassium ions is potassium channel is open, but there is another channels which are going to open in this phase is calcium channels. So calcium channel whenever opens, the movement of calcium will happen from outside to inside, and potassium movement is from inside to outside. So it will balance. It will balance both the potential. So due to that, this action potential will become stable, and that's why we call it a plateau phase as well. So this is your phase 2. Then when we talk about phase 3, so what will happen at the end of phase 2? This calcium channel is going to close. So now your calcium channel is closed, so what will happen? And potassium channel remain open. So what will happen? Your action potential will go towards lower side or upward side. It is going to towards the lower side. The reason is because calcium is closed and potassium is open, and potassium movement is from inside to outside. So your membrane will become less negative. Sorry, not less negative, it is going towards the negative side, right? So that is your phase 3. So in phase 3, your potassium channel open and calcium channel closed. That is happen in the phase 3, the movement of ions in the phase 3. And again, then there is a phase 4 as resting membrane potential start again, right? So again, I going to explain about electrophysiology of heart. Electrophysiology of heart में there is एक 0 phase, 1 phase, 2 phase, 3 phase, 4 phase. Phase 0 में क्या है? First is resting membrane potential of cell is -90 millivolt when we talk about cardiac cell. सबसे पहले क्या होगा, जब whenever any stimulus is generated, then what will happens? आपकी movement होगी ions की movement होगी. तो सबसे पहले आपके आयंस जब इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस आया, देन सोडियम चैनल जो हैं वो ओपन होंगे, और सोडियम क्या होगा, मूव होगा कहाँ से? ये दिस इज द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये सेल का अंदर वाला पार्ट है, दैट इज द इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, ICF वी कॉल, राइट? व्हेनेवर स्टिमुलस इज जनरेटेड, देन व्हाट विल हैपन? सोडियम चैनल खुलेंगे तो क्या होगा? मूवमेंट होगी किस आयन की? सोडियम की. सोडियम मूव होगा बाहर से अंदर की तरफ. द रीज़न इज क्योंकि सोडियम की कंसंट्रेशन नॉर्मली एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा होती है, बाहर सेल के बाहर, और अंदर कम होती है. तो बाहर ज़्यादा कंसंट्रेशन है, अंदर कम है, तो बाहर से अंदर की तरफ मूवमेंट होगी, राइट? सो सोडियम विल मूव इनसाइड द सेल्स. सोडियम आयन जब इन सेल के अंदर आएंगे, देन योर एक्शन पोटेंशियल विल बिकम, बिकॉज एक्शन पोटेंशियल इज -90 मिलीवोल्ट, इट विल बिकम लेस नेगेटिव, क्योंकि सोडियम पे चार्ज क्या है? पॉजिटिव है, तो वो थोड़ा सा लेस नेगेटिव की तरफ जाएगा आपका एक्शन पोटेंशियल. जब आपका एक्शन पोटेंशियल एक वैल्यू, थ्रेशोल्ड वैल्यू पे पहुंच जाएगा, देन व्हाट विल हैपन्स? आपके और चैनल ओपन होंगे जो कि वोल्टेज गेटेड सेंसिटिव सोडियम चैनल है, वोल्टेज गेटेड सेंसिटिव कैल्शियम चैनल है. दीज आयन चैनल विल ओपन डिपेंडिंग अपॉन द टिश्यूज. सो ये चैनल ओपन होंगे जब सोडियम और इन्फ्लक्स होगा, कैल्शियम अंदर आएगा, तो आपका एक्शन पोटेंशियल किस साइड जाएगा? पॉजिटिव साइड. ये पॉजिटिव वाली साइड है, राइट? एंड इट विल रीच अप टू +30 मिलीवोल्ट अप्रॉक्सीमेटली. तो आपका एक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव की तरफ जाएगा. दिस फेस, जो ये फेस बनती है, उसको हम बोलते हैं फेस 0, राइट? अब फेस 0 के बाद क्या होगा? योर सोडियम चैनल क्लोज. अब आपके सोडियम चैनल, अगर मैं इसको बंद कर दूं सोडियम चैनल को, तो सोडियम की मूवमेंट अंदर की साइड कम होगी. सो एक्शन पोटेंशियल विल गोस लिटिल बिट डिप, लिटिल बिट फॉर मिली सेकेंड्स, इट विल डिप, थोड़ा सा नीचे होगा कर्व. देन देर इज ए फेस 2. फेस 2 हाउ इट हैपन्स? बिकॉज योर पोटासियम चैनल इज ओपन एंड कैल्शियम चैनल ओपन. अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि दोनों के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है, तो एक्शन पोटेंशियल स्टेबलाइज कैसे हो गया? प्लेट्यू फेस कैसे बन गई? होना तो ये चाहिए कि अगर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो एक्शन पोटेंशियल ऊपर की तरफ जाना चाहिए, राइट? द रीज़न इज पोटासियम जो है वो सेल्स के अंदर आपका ज़्यादा होता है, बाहर कम होता है. तो जब भी पोटासियम चैनल ओपन होते हैं तो मूवमेंट क्या होगी? पोटासियम की मूवमेंट होगी अंदर से बाहर.
सो पोटासियम जब अंदर से बाहर जाएगा तो पॉजिटिव आयन सेल्स के अंदर कम होंगे, ज़्यादा होंगे, कम होंगे, और उसको बैलेंस करने के लिए कैल्शियम ओपन हुआ है, तो कैल्शियम क्या करेगा, कैल्शियम बाहर से अंदर की तरफ जाएगा। तो एक कैटाइन आपका अंदर की तरफ जा रहा है, बाहर से अंदर, एक कैटाइन अंदर से बाहर जा रहा है। तो ड्यूरिंग दैट फेज योर एक्शन पोटेंशियल विल बिकम स्टेबलाइज, प्लेट्यू फेज, दैट इज प्लेट्यू फेज, फेज 2, राइट। एट द एंड ऑफ फेज 2 व्हाट विल हैपन्स, योर कैल्शियम चैनल इज गोइंग टू क्लोज। अब कैल्शियम चैनल बंद हो गए, अब कैल्शियम बंद हो गए, कैल्शियम की मूवमेंट कहाँ से हो रही थी, बाहर से अंदर की तरफ, राइट। अब एक कैल्शियम बंद कर दिए मैंने, और पोटासियम रिमेन ओपन, पोटासियम अभी भी खुले हुए हैं। जब पोटासियम खुले हुए हैं तो पोटासियम अंदर से बाहर और जाता जाएगा, तो अंदर सेल के अंदर एक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव की तरफ से जाएगा, नेगेटिव की तरफ, इट विल गोज टुवर्ड्स नेगेटिव साइड। तो आपका फेज 3, सो दैट इज बी कॉल्ड रीपोलराइजेशन फेज। तो पोटासियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीपोलराइजेशन एज वेल। दिस इज द डीपोलराइजेशन, दिस इज द रीपोलराइजेशन, राइट, अपोजिट टू ईच अदर, दैट इज योर फेज 3। Then your again phase 4, then phase 1, phase 2, phase 3, right? This is your electrophysiology of heart. Only thing which is important to understand is many time question is asked कि पोटासियम चैनल जब ओपन हो रहा है तो आपका एक्शन पोटेंशियल डिप क्यों कर रहा है। जब आप बोल रहे हो कि आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90 मिली वोल्ट है, और जब आपका सोडियम एंटर किया तब आपकी ऊपर की तरफ जा रही है कर्व, पोटासियम पे भी पॉजिटिव चार्ज है, सोडियम पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो जब सोडियम मूव कर रहा है तब एक्शन पोटेंशियल ऊपर की तरफ जा रहा है, जब पोटासियम मूव कर रहा है तो आपका नीचे की तरफ जा रहा है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी मूवमेंट ऑफ आयन्स, इट डिपेंड्स अपॉन द मूवमेंट ऑफ आयन। क्योंकि सोडियम आपका बाहर ज़्यादा है, अंदर कम है, तो बाहर से अंदर की तरफ आता है, और पोटासियम अंदर ज़्यादा है, बाहर कम है, तो ये अंदर से बाहर जाएगा, अंदर से बाहर पॉजिटिव चार्ज जाएगा तो वो लेस नेगेटिव होगा। अगर बाहर से अंदर आ रहा है पॉजिटिव तो ऊपर की तरफ जाएगा। दैट इज़ द रीज़न, राइट। सो नेक्स्ट इज sorry. So now in unit 1, drugs acting on cardiovascular systems, right? So drugs acting on cardiovascular systems. So first drugs which we are going to discuss is drugs which are used in the treatment of CHF, congestive heart failure. So what are the drugs which we are using for the management of the CHF, that we are going to discuss. So first try to understand what happens in the CHF, congestive heart failure, what happened to the heart. So congestive heart failure is a condition in which your ventricle is unable to push proper amount of the blood to the aorta to arteries, then capillaries, and whole process will be disturbed. That is your CHF, congestive heart failure. So normally what happens, you know, there is a ventricles will be contract and push the blood to the aorta, that we call stroke volume. So in congestive heart failure patients, stroke volume is decreased, and we have already discussed whenever your stroke volume is decreased, of course your blood pressure is going to decrease, and it will be sensed by your carotid sinus, it's going to sense by your baroreceptors which are present on the blood vessels, and it will sense it, and first body will try to increase it, body will try to manage the congestive heart failure conditions. And how body compensatory mechanism work? By activation of, because this signal will send to the brain that stroke volume is decreased, signal will goes to the brain, and in response to it what brain is going to do? It going to activate your sympathetic system, and already we have discussed in earlier video what is sympathetic system, what is the role of sympathetic system. So it's a part of your ANS, that is autonomic nervous system. So whenever our stroke volume is decreased, which happen in the CHF patients, it will activate it will send the signal to the brain. In response to that, brain will stimulate your sympathetic system, and when your sympathetic system stimulated, so your adrenaline, non-adrenaline, these kind of neurotransmitter is released, and these adrenaline, non-adrenaline have receptor all over the bodies, alpha and beta. So when we talk about beta receptors, so beta 1 is present on the heart and all over the heart. So beta 1 receptors will try to, if it's act on the sinus, it will result in tachycardia. If it act on the ventricles, it will increase the cardiac output.
So your cardiac output will little bit increase. This is the one of the compensatory mechanism by which body is trying to increase the cardiac output, which is decrease in the CHF patients. So CHF patients में आपकी cardiac output कम हो गई है, बॉडी ने सेंस किया, बॉडी ट्राई कर रही है उसको इंक्रीज करने का. कैसे कर रही है? बॉडी ने सिग्नल ब्रेन को गया, ब्रेन ने सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट किया, सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हुआ तो आपके न्यूरोट्रांसमीटर एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन इस तरह के रिलीज हुए. बीटा 1 रिसेप्टर हार्ट पे ऑल ओवर द हार्ट इट प्रेजेंट, इट स्टिमुलेट द हार्ट, इट कॉन्ट्रैक्ट द वेंट्रिकल एज वेल, राइट. सो वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट किया और आपका स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ाया, आपकी कार्डिक आउटपुट बढ़ाई, राइट. दैट इज द वन कंपनसेटरी. अनदर कंपनसेटरी इज these adrenaline non-adrenaline will act on alpha 1 receptor as well. Alpha 1 receptors are present on your blood vessels, it's present on veins, it's present on arteries, smooth muscles as well. So particularly when we talk about compensatory mechanism, it act on your venous smooth muscles, veins, it act on the veins. Veins will constrict. If veins constrict, so what will happen? More filling of the right atrium, more filling of your heart, your heart will fill more, right. When your veins constrict, so your heart filling will be much more. So if your blood in the heart is going to increase, so what will happen? Your more amount of the blood will be ejected by the ventricles, and it helps in the CHF patients because ultimate goal is you want to increase the cardiac output. तो वेन्स कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे, वेन्स कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे तो वेन्स से क्या होगा? हार्ट की फिलिंग ज़्यादा होगी, हार्ट की फिलिंग ज़्यादा होगी, मोर ब्लड जाएगा वेंट्रिकल में, मोर ब्लड वेंट्रिकल में जाएगा, मोर आपकी कार्डिक आउटपुट हो जाएगी. दैट इज अनदर कंपेंसेटरी मैकेनिज्म. बट कंपेंसेटरी मैकेनिज्म प्लेइंग ए ड्यूअल रोल. इट्स यूजफुल बट इन लॉन्ग टर्म इट डू द हार्म टू द बॉडी. सो हाउ इट गोइंग टू डू द हार्म? हार्म कैसे करेगा? यही कंपेंसेटरी मैकेनिज्म CHF पेशेंट्स के लिए लंबे टाइम के लिए वो उसके हार्ट को फेल कर देगा, उसकी डेथ भी करवा देगा. हाउ इट्स गोइंग टू हैपन्स? बिकॉज दी सिंपैथेटिक सिस्टम alpha 1 receptors is not present only on the venous smooth muscle, it's present on arteries as well. So ये आपकी arteries है, aorta है, then arteries. So when alpha 1 receptor, when your sympathetic system activated, it act on the alpha 1 receptors on the arterial smooth muscles, तो ये arteries constrict करेंगे. ये already this is a CHF, this is the heart which is not working properly, so it will get a trouble because your afterload will be increased because your heart is trying to pump but already there is a constriction in the arteries, so it will increase the pressure on the heart. So that is the harmful effect of compensatory mechanism on the long run. That's why we will discuss later, that's why beta 1 blockers we are adding to the CHF patients prescriptions to minimize or to increase the survival of the patients, or to manage the compensatory harmful effects. This is the one. Another compensatory mechanism we already discussed in the last video as well, because when your cardiac output is decreased, your blood flow to renal system is also decreased, and when your renal blood flow is decreased, then there is a activations of well known system, that is the renin angiotensin aldosterone system, which we have covered in detail in earlier video. I am not going to describe it again, but it's going to activate activate your renin angiotensin aldosterone system, and ultimately activation of this result in more reabsorption of sodium and water ions. So your sodium and water is going to reabsorb more, it will return to the blood circulation. More circulation it reach, more filling of your ventricles, more filling of the ventricle, more will be the cardiac output, and that is you want to increase the cardiac output. But again, long run, this activation of renin angiotensin aldosterone system will do the damage. How it is going to do the damage? Because this renin angiotensin aldosterone activation is going to do the reabsorption of more sodium and water. More sodium and water, when reabsorption happen, more blood volume, more filling of the heart, more filling of ventricles. So there is a chronic stress on the ventricle muscles. Earlier, for example, it's a 130 ml, but now due to activations of your renin angiotensin aldosterone system, now blood in the ventricle is, for example, 250 ml. So this blood will create a pressures on the muscles of the ventricles, on these parts, and long term stress of this blood will do the alterations in these particular muscles,
And what alteration it going to do? It going to alter the genes which are responsible for the synthesis of contractile proteins like myosin. So what will happen on long run, because there is a chronic stress on the ventricle, and due to chronic stress what will happen, your contractile protein actin and myosin synthesis is going to decrease, and your extracellular matrix is going to form. So this is more dangerous. This is the more dangerous situation of the heart. And how it happening? Due to compensatory mechanism at the long run. So that's why we have a medicine which is going to slow down these compensatory mechanism. For short term it's beneficial. For short term compensatory mechanism is very useful. But at long term same compensatory mechanism is going to damage. So how it's going to damage? As I said, it's going to damage? More reabsorption of sodium and water, more blood volume, more filling of the heart, more blood in the ventricles. If it long run, it going to create a chronic stress. Chronic stress is going to modify the genes which are responsible for the synthesis of the contractile proteins like myosins, actin, and there is a formations of more extracellular matrix. So your heart is going in the face of cardiac dilatations. So it's a more dangerous situation, right? So now to manage the CHF patients, congestive heart failure patients, we have a medicines which is going to control the compensatory and which is going to increase the cardiac output. So what are the medicines which we are going to use in the management of the CHF, congestive heart failure? The drugs are, drugs which we are using for the CHF, congestive heart failure patients. So you know, digoxin is a well known drug which is used for the CHF, but it's not the first line drug. The reason is because digoxin belongs to narrow therapeutic index, and the drugs which belongs to narrow therapeutic index means, so every drug has your minimum effective concentrations and maximum safe concentrations. So our drug concentrations should fall under this, and this be called therapeutic window, right? So if our drug is going to increase or passing the maximum safe concentration, it will produce a toxic effect. If I am taking some drug, it's not reaching to this levels, minimum effective concentration levels, its level is below that, I will not get the response, right? So the drugs which belongs to narrow therapeutic, if this therapeutic window is narrow, so what will happen? You have to be very careful. If you are increasing or decreasing the dose, you have to do the TDM, that we call therapeutic drug monitoring of the patients. When you are giving the medicines which belongs to narrow, this for example, this therapeutic window is this much for digoxin. So what will happen? If your therapeutic window is narrow, तो क्या हो जाएगा? उससे क्या होगा कि आपने थोड़ी सी डोज, अगर थोड़ा सा आपने ज़्यादा या कम हुई डोज, so it will cross this line and produce the toxic effect. यही आप अगर दूसरी ड्रग के बारे में सोचो, इसका इतना वाइड है नैरो थेरेपेटिक वाइडर थेरेपेटिक इंडेक्स, तो इस ड्रग में अगर थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन भी होता है कंसंट्रेशन में, तो हमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? क्योंकि ये आपकी मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन का ये है लेवल. अब कोई दूसरी ड्रग है जिसका ये विंडो है, तो उस विंडो में आपको केयरफुल रहना पड़ता है उन ड्रग्स में. इन दीज ड्रग्स वी हैव टू डू द TDM. TDM मीन्स थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग. जब आप ऐसी दवाइयाँ पेशेंट्स को देते हो तो उस टाइम पे आप उसकी मॉनिटरिंग भी करते हो कि ब्लड में इसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही या घट तो नहीं रही है. सो वी हैव टू डू दैट. सो ड्रग्स यूज्ड फॉर द CHF, एज आई सेड, well known drug is digoxin, but digoxin is not the drug of choice due to its toxicity. Because digoxin is a drug which belongs to narrow therapeutic index. So that's why this is not the drug of choice. So drugs which we are using for the CHF at early stages, the drugs are diuretics. So diuretics are those agents which will increase the urine output. तो RAS सिस्टम क्या कर रहा था? आपके वाटर, सोडियम को ज़्यादा रीअब्जॉर्ब करवा रहा था, मोर ब्लड वॉल्यूम, मोर वेंट्रिकल फिलिंग हो रही थी, वो आपकी स्ट्रेस दे रही थी आपके वेंट्रिकल मसल पे, जिसकी वजह से आपकी अल्टरेशन हो रही थी. तो आप ऐसी दवाई दो जो रीअब्जॉर्ब हो रहा था सोडियम एंड वाटर कंपेंसेटरी मैकेनिज्म की वजह से वो बॉडी से निकल जाए. सो इट विल हेल्प द CHF पेशेंट्स. दैट इज द वन, दैट इज द डायरेटिक्स. अनदर्स आर, देयर इज ACE inhibitors, angiotensin converting enzyme inhibitors. So angiotensin converting enzyme inhibitors, if you see the RAS mechanisms,
So you will find that angiotensin converting enzyme inhibitors are converting angiotensin 1 into angiotensin 2. These are the enzymes which are converting angiotensin 1 into angiotensin 2. And this angiotensin 2, which is formed with the help of this enzyme ACE, this angiotensin 2 is a stimulator of sympathetic system. So it is, if it's going to stimulate your sympathetic system, so again it will increase your cardiac output, but will it also do the arterial constrictions due to its action on the alpha 1 receptors, and due to, because your arteries are constricted, so it will increase your afterload, right? That is a one. How angiotensin converting enzyme are helpful in the CHF patient. This is a one mechanism by which angiotensin converting enzymes drugs like captopril, enalapril, lisinopril, these medicines are useful for the CHF patient. This is the one mechanism. Apart from that, another mechanism is because angiotensin 2 is have a receptors in the blood vessels as well, and when angiotensin 2 act on its blood vessel receptors, that is angiotensin 2 receptor, it will result in the constrictions of blood vessels, right? So constriction of blood vessels again going to harm the condition of the CHF patients. So when your angiotensin is not formed, because if you are blocking this enzyme, so angiotensin 2 is not converting to angiotensin 2, so angiotensin 2 is not going to act on its receptors, so of course it will be helpful. This is another mechanism how it will be helpful for the CHF patients. Another mechanism is because angiotensin 2 stimulate your RAS system as well, right? So your angiotensin 2 is going to stimulate your adrenal cortex and releasing the aldosterone. Aldosterone is acting on kidney and doing the reabsorption of sodium and water, and reabsorption of sodium and water for the long run it going to be dangerous for the CHF patients. So these are the third mechanism. So you can see that angiotensin converting enzyme inhibitor like captopril, enalapril, lisinopril, they are how much useful to the CHF patients, and they are showing their action not only through one mechanism, they are showing their action through multiple mechanisms. And what are the multiple mechanisms? One mechanism is angiotensin, because angiotensin 2 is not formed, and angiotensin 2 is a stimulator of sympathetic system. So sympathetic system is not stimulated, then horse cycle will not be happen. Angiotensin 2 have a receptor on the blood vessels, and when it act on the blood vessels, it's going to constrict the blood vessel. Constriction of blood vessels in the CHF patients will increase its preload and afterload. If veins are constricted, then it will increase your preload. If your arteries are constricted, it will increase the afterload. Then another mechanism is it's going to activate your renin angiotensin aldosterone system. If it's not formed, so your reabsorption of sodium and water will not happen. If reabsorption is not happen, chronic stress on the ventricle will be reduced. So these are the mechanism by which angiotensin converting enzyme inhibitors are helpful to the CHF patients. So we are talking about ACE inhibitors. So well known drug is captopril. So if you write the captopril like this way, you can get to know about the adverse effects of the angiotensin converting enzyme inhibitor. C stands for cough. Angiotensin converting enzyme inhibitors in some patients can result in the dry cough. The reason is, why dry cough? Because bradykinin level is going to increase, because bradykinin is going to be break down by the ACE. Angiotensin converting enzymes जो है वो बॉडी में bradykinin के लेवल को ब्रेक करता है, पर जब आपने ऐसी दवाई दे दी जो angiotensin converting enzyme को इनहिबिट कर रही है, तो वो एंजाइम ब्रैडिकाइनिन को भी नहीं तोड़ पाएगा, उसका लेवल बढ़ जाएगा, ब्रैडिकाइनिन का लेवल बढ़ेगा तो आपको कफ हो सकता है इन सम पेशेंट्स. दैट इज वन ऑफ द एडवर्स इफेक्ट ऑफ ACE inhibitors. Second is angioedema. In some patients you can get the angioedema. In some patients P stands for proteinuria. In some patients it will result in taste disturbances. In O stands for it can result in hypotension. P stands for all the ACE inhibitors are contraindicated in pregnancy. R stands for it results in some patient rashes. I stands for it results in inhibitions of your
reabsorption of sodium and water. Sodium and water. And L stands for, sorry, it's going to be increase level of angiotensin 1, because angiotensin 1 is not going to convert into angiotensin 2, and it's going to decrease the level of your potassium as well. So these all are the adverse effects of your angiotensin converting enzyme inhibitor. Captopril, cough, angioedema, proteinuria, taste disturbances, hypotensions, all these are contraindicated in pregnancies. All ACE inhibitors, all are contraindicated in pregnancies. So that's why we have another drug that we call ARB blocker, angiotensin receptor blocker, the drugs which end with the sartan, losartan, candesartan, irbesartan. So these drugs, what they are going to do, they are not going to block the conversion of angiotensin 1 into angiotensin 2. This is the ACE, but these drugs are going to block the action of angiotensin 2. These are the drugs, ARB blocker. What these drugs are going to do, they are not going to interfere here, they are going to interfere here. After formation of angiotensin 2, it's not going to act on its receptors. So these receptors are blocked by the medicines, that medicines are losartan, candesartan. So due to that, your cough and angioedema adverse effect you will not get with the ARB blockers, right? Because cough is happening due to increase in bradykinin. So your enzyme is working properly, so bradykinin is going to break down. Okay. Okay. So now we are going to discuss about mechanism of actions of the drugs which we are using in the treatment of CHF, particularly the drugs which are inotropic in nature. So drugs which we are using for the CHF, I think this is CHF, congestive heart failure, drugs which we are used for CHF, congestive heart failure. So drugs used for the congestive heart failures. So one category of the drugs which we are using is inotropic agents, inotropic drugs or inotropic agents. So drugs, inotropic means the drugs which are going to increase the contraction of the ventricle, that we call inotropic drugs or inotropic agents. So under these categories we have well known drug digoxin or digitoxin, which is obtained from Digitalis purpurea or Digitalis lanata. Another drug is which we are using as a inotropic agents are sympathomimetic drugs, which also increase the force of contraction of the ventricles. Then we are using another drugs are phosphodiesterase inhibitors. So these are the drugs which comes under inotropic agents and useful in the treatment of CHF, digoxins or digitoxins, sympathomimetic drugs and phosphodiesterase inhibitors. So one by one we are going to discuss what is the mechanism of action, how digoxin increase the force of contraction of ventricles, how sympathomimetic increase the force of contraction of the ventricles, how phosphodiesterase inhibitor increase the force of contractions of the ventricles. So first one is digoxins. So to understand the mechanism of action of the digoxins, first again we have to recap how the ions movement happens in the cardiac cells. For example, this is your cardiac cells, right? So this is your cell membrane and there is a ion channels. This is your sodium channels which helps in the movement of sodium ions. So as I told you, resting membrane potential of cardiac cells is minus 90 millivolt. So whenever any stimulus is there, so what will happen with the stimulus, there is a movement of ions will happen. This is your cell membrane is made up of phospholipids, right? There is a phosphate, this part is phosphate, this is your hydrocarbon part or lipid part.
This is bilayer. So this is the cell membrane, right? Cell membrane of cardiac cells. So this is your intracellular part and this is your extracellular part. So this is extracellular part, extracellular fluid. This is your intracellular part. Intracellular part means inside the cells. So now whenever there is any stimulus, then what will happen? There is a movement of ions, and movement of ions will happen. Sodium ions will move, and these sodium ions will move with the help of channels, and that channel we call sodium channels. And movement of sodium will happen from extracellular to intracellular, right? This sodium will move inside the cells. Then already in the last video we have discussed about when action potential reach up to threshold point, there is a movement of calcium ions as well. Voltage gated calcium channel is also open. So calcium is also moved from outside to inside the cells. And inside the cells, the organelle, which is known as smooth endoplasmic reticulum, it is the internal storehouse of the calcium ions inside the cells. Smooth endoplasmic reticulum. So smooth endoplasmic reticulum, these calcium has a receptors on the smooth endoplasmic reticulum, and smooth endoplasmic reticulum already stored the calcium ions. So these calcium ions will release, and this calcium is going to bind with one protein. That protein name is tropomyosin. And when your calcium bind with the tropomyosin proteins, so what it going to happens, your actin and myosin filaments is going to interact with each other. Actin and myosin, these are the contractile proteins. When actin and myosin interact with each other, it will result in the contraction of the ventricles, right? So this is the process. Again, if I repeat, प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले आपका व्हेनेवर जब भी कोई स्टिमुलस आया उससे क्या हुआ, आपका सोडियम आयंस मूव हुआ बाहर से अंदर की तरफ, एक्शन पोटेंशियल थ्रेशोल्ड पे पहुंचा, वहां से आपके कैल्शियम भी इन्फ्लक्स हुआ। कैल्शियम के आपका इंटरनल स्टोर हाउस है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहां से और कैल्शियम रिलीज हुआ। कैल्शियम बाइंड किया एक प्रोटीन के साथ, उस प्रोटीन का नाम है ट्रोपोमाइसिन। जब कैल्शियम बाइंड करेगा ट्रोपोमाइसिन के साथ तो एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे। जब ये दो फिलामेंट्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो आपकी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल बढ़ेगी एंड योर कार्डियक आउटपुट विल बी इंक्रीज, right? This is a normal physiological process. Yet now we have not discussed how the digoxin is helpful. Now next thing which happens physiologically, because अभी contraction हुई, then it has to become at the relaxation stage as well. So how it happens? So क्या होगा, जो extra calcium है ये क्या होगा, दोबारा restore हो जाएगा smooth endoplasmic reticulum में. There is a calcium ATPases. There is a calcium ATPases at the smooth endoplasmic reticulum which help to store the calcium back. तो ये दोबारा जो कैल्शियम बचा वो दोबारा स्टोर हो जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। जो ये वाला कैल्शियम है इट विल बी मूव आउटसाइड द सेल्स विद द चैनल्स, आयन चैनल्स, बाय विच कैल्शियम विल गो आउटसाइड एंड सोडियम विल मूव फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड. दिस इज वी कॉल्ड कैल्शियम सोडियम एक्सचेंजर. इस आयन चैनल से क्या हो रहा है, सोडियम और कैल्शियम एक्सचेंज हो रहा है. क्या हो रहा है एक्सचेंज, जो कैल्शियम यहाँ पे जो एक्स्ट्रा था वो मूव हो रहा है फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड एंड सोडियम इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड. बट येट आपका सेल अभी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पे नहीं आया है. तो व्हाट इज हैपन्स नाउ, एक्स्ट्रा क्या बच गया, सोडियम आयन. सोडियम आयन यहाँ भी है, यहाँ भी आए हैं. तो दीज आयन ऑल्सो हैज टू बी go back to the extracellular fluid. So how it will be go? There is another pump and well-known pump, sodium potassium pump, and by that pump 3 sodium will go outside and 2 potassium will come inside. Right? This is a pump. This is the primary active transport which need the energy by which जो ये सोडियम है ये क्या होगा, इस पंप की हेल्प से there is sodium potassium ATPases is the enzymes which help फॉर द मूवमेंट ऑफ आयंस. तो ये जो सोडियम है ये अंदर का बाहर चला जाएगा और पोटासियम बाहर से अंदर आ जाएगा. दैट इज योर नॉर्मल स्टेट ऑफ सेल्स. यहाँ पे आपकी कॉन्ट्रैक्शन हुई, कॉन्ट्रैक्शन के बाद आपके सेल्स को नॉर्मल स्टेट में भी आना है. तो आएगा कैसे, जो आपका कैल्शियम बच गया वो स्टोर हो जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. जो यहाँ का कैल्शियम है वो अंदर से बाहर जाना है, तो उसको हेल्प कौन कर रहा है, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर, जिसकी हेल्प से सोडियम कैल्शियम बाहर जा रहा है और सोडियम अंदर आ रहा है. अब अंदर क्या बचा आपका, और सोडियम आयन. सोडियम बाहर कैसे जाएगा, एक पंप की हेल्प से. उस पंप का नाम क्या है, सोडियम पोटासियम पंप. तो उससे क्या होगा, 3 सोडियम बाहर 2 पोटासियम अंदर. तो ऑब्वियसली जो नॉर्मल स्टेट है सेल की उसमें क्या है,
सोडियम आपका बाहर ज़्यादा है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में और पोटासियम अंदर ज़्यादा है, तो इट विल बी हेल्प, राइट। नाउ दिस इज नॉर्मल प्रोसेस. Now when we talk about digoxin, digoxin is a drug which is going to block this pump. This pump name is sodium potassium ATPase. Sodium potassium ATPases, because this pump need the energy for the movement. तो ATPases will do the breakdown of ATP, ADP, वो energy utilize movement के लिए कर रहा है. तो digoxin एक ऐसी दवाई है, what it going to do? Digoxin is going to inhibit this particular sodium potassium ATPase. So by that, because it is block, so अगर ये ब्लॉक हो गया तो आपकी मूवमेंट 3 सोडियम बाहर नहीं जाएंगे और 2 पोटासियम अंदर नहीं आएंगे. तो उससे क्या होगा, अगर कोई दवाई इसको ब्लॉक कर रही है तो सोडियम की कंसंट्रेशन सेल के अंदर बढ़ जाएगी. सोडियम की कंसंट्रेशन बढ़ गई क्योंकि सोडियम अंदर से बाहर नहीं जा रहा है. क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि आपका पंप काम नहीं कर रहा. पंप क्यों नहीं काम कर रहा है? क्योंकि आपकी दवाई ने इसको ब्लॉक कर रखा है. तो सोडियम अंदर बढ़ गया. सोडियम अंदर बढ़ गया तो ये जो आपका कैल्शियम सोडियम एक्सचेंजर है ये भी अफेक्ट करेगा. तो आपका सोडियम बाहर से अंदर नहीं आएगा और कैल्शियम अंदर से बाहर नहीं जाएगा. तो सोडियम क्या कर रहा है आपका, इंक्रीज सोडियम इज इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम इनसाइड द सेल्स. और कैल्शियम अंदर बढ़ गया तो कैल्शियम क्या करेगा, आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और कैल्शियम रिलीज करवाएगा. कैल्शियम बाइंड करेगा ट्रोपोमाइसिन के साथ, एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स की इंटरेक्शन करवाएगा और कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएगा. एंड दैट इज रिक्वायर्ड. CHF के पेशेंट्स में वेंट्रिकल आपके कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं, तो ये दवाई वेंट्रिकल को कैसे कॉन्ट्रैक्ट करवाएगी, दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ डिगॉक्सिन. तो कैसे करेगी, इस पंप को ब्लॉक कर देगी. इस पंप को ब्लॉक करेगी, 3 सोडियम बाहर नहीं जाएंगे, सोडियम की कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा बढ़ेगी. अंदर ज़्यादा बढ़ी तो ये सोडियम और कैल्शियम एक्सचेंजर है, ये भी काम नहीं करेगा. ये काम नहीं करेगा तो कैल्शियम अंदर से बाहर नहीं जाएगा, कैल्शियम की कंसंट्रेशन अंदर बढ़ जाएगी. कैल्शियम की कंसंट्रेशन अंदर बढ़ गई तो आपको मैकेनिज्म पता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे एक्ट करेगा, वहाँ से और कैल्शियम रिलीज करेगा. कैल्शियम जो है वो बाइंड करेगा ट्रोपोमाइसिन के साथ. ट्रोपोमाइसिन क्या करेगा, एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स को इंटरेक्ट करवाएगा और कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देगा. दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ डिगॉक्सिन. So whenever we talk about digoxin mechanism, first you have to understand कि normal physiological conditions में क्या हो रहा है. तो quickly if I again tell you क्या हो रहा है quickly, सबसे पहले क्या हो रहा है, सोडियम आयन चैनल ओपन हो रहे हैं, सोडियम अंदर आ रहा है, राइट. सोडियम जब थ्रेशोल्ड पे पहुंच जा रहा है एक्शन पोटेंशियल तो आपका कैल्शियम भी अंदर आ रहा है. कैल्शियम अंदर आ रहा है तो अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में को ये एक्टिवेट कर रहा है और ज़्यादा कैल्शियम रिलीज हो रहा है. कैल्शियम बाइंड कर रहा है एक प्रोटीन के साथ, ट्रोपोमाइसिन के साथ, और ट्रोपोमाइसिन की बाइंडिंग के बाद कैल्शियम एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट की इंटरेक्शन करवा रहा है, जिससे आपका फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ रहा है. अब इस सेल्स को नॉर्मल भी आना है, तो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल में कैसे नॉर्मल आएगा, जो ये कैल्शियम एक्स्ट्रा रिलीज हुआ ये दोबारा रीअपटेक हो जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. दिस इज द वन. ये जो कैल्शियम है देयर इज ए वन एक्सचेंजर जिसकी हेल्प से कैल्शियम बाहर चला जाएगा और सोडियम अंदर आ जाएगा. दैट इज बिकॉज सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर. तो ये जो कैल्शियम है ये बाहर जाएगा, सोडियम अंदर आ जाएगा. अब अंदर सेल के अंदर क्या रह गया एक्स्ट्रा जिसको बाहर जाना चाहिए नॉर्मल, अगर सेल को नॉर्मल कंडीशन में आना है तो क्या बचा, सोडियम बचा. अभी सोडियम भी बाहर जाना चाहिए तो कौन सा पंप हेल्प कर रहा है सोडियम को बाहर जाने के लिए, सोडियम पोटासियम पंप. 3 सोडियम बाहर, 2 पोटासियम अंदर. और इससे आपका क्या हो रहा है, सोडियम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा है और इंट्रासेलुलर फ्लूइड में पोटासियम ज़्यादा है. दैट इज द नॉर्मल मैकेनिज्म. अब डिगॉक्सिन एक दवाई है जो इसको ब्लॉक कर देती है. और डिगॉक्सिन हम क्यों दे रहे हैं, डिगॉक्सिन हम उन पेशेंट्स को दे रहे हैं जिनमें वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है प्रॉपरली. तो जब इसको आप ब्लॉक कर देंगे तो वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन कैसे बढ़ेगी, 3 सोडियम बाहर नहीं जा पाएंगे तो सोडियम की कंसंट्रेशन आपके सेल के अंदर बढ़ गई, राइट. सोडियम की कंसंट्रेशन बढ़ी गई तो बाहर का सोडियम अंदर नहीं आ पाएगा, तो उससे ये एक्सचेंजर अफेक्ट होगा, तो आपका कैल्शियम अंदर से बाहर नहीं जा पाएगा. कैल्शियम अगर अंदर से बाहर नहीं जा पा रहा है तो कैल्शियम की कंसंट्रेशन अंदर बढ़ जा रही है. अंदर बढ़ रही है तो कैल्शियम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एक्टिवेट कर रहा है, मोर कैल्शियम रिलीज कर रहा है, ट्रोपोमाइसिन एक्टिन मायोसिन और वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा दे रहा है. दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ डिगॉक्सिन इन दी CHF, राइट. नाउ सेकेंड ड्रग इज योर सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स. Sympathomimetic drugs. Sympathomimetic drugs, how they are useful in the congestive heart failure patients. So drugs are dopamine and dobutamine. Dopamine and
dobutamine.